महाराष्ट्र और झारखंड असेंबली इंतखाबात का शेड्यूल जारी हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र और झारखंड असेंबली इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया है। इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीलात बताई। ये इंतखाबात एक मरहले में 288 नशिस्तों के लिए मुनक्किद होंगे। महाराष्ट्र कानून साज असेंबली के इंतखाबात के लिए नोटिफिकेशन 22 अक्टूबर 2024 को जारी होगा। पर्चा नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 29 अक्टूबर है। नामजदगियों की जांच 30 अक्टूबर को होगी और नामजदगी वापसी की आखिरी तारीख 4 नवंबर रखी गई है। महाराष्ट्र में वोटिंग 20 नवंबर 2024 को एक ही मरहले में होगी, जबकि गिनती 23 नवंबर को होगी और इंतखाबात की तकमील 25 नवंबर तक होगी। महाराष्ट्र में वोटरों की कुल तादाद 9 करोड़ 63 लाख है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक महाराष्ट्र में कुल वोटर्स की तादाद तकरीबन 9 करोड़ 63 लाख बताई गई है, जिसमें 4 करोड़ 97 लाख मर्द और 4 करोड़ 66 लाख खवातीन शामिल है। 1 करोड़ 85 लाख नौजवान 20 से 29 साल उम्र के भी शामिल है। Now I come to the schedule for Maharashtra. This will be in single phase. The notifications, date of notifications are in front of you. 22nd October would be date of notification. Last date of making nomination would be 29th October. Scrutiny on 30th October. And last date for withdrawal 4th, and date of poll in Maharashtra would be 20th 11. Counting would be on 23rd 11/24, and you will notice that date of poll is Wednesday. This is deliberately, which lot of scheduling, whatever goes into scheduling, we have tried that it is midday so that issue of urban apathy is handled. Now, friends, coming to Jharkhand. झारखंड एक बहुत ही समृद्ध स्टेट है, बहुत ही उसकी विरासत है, और वहां पर हम फिर से अपील करेंगे कि सब वोटर्स अधिक से अधिक मात्रा में वोट दें। Schedule would be like this. Jharkhand would be in 2 phases. The date of poll, first phase would be on, date of poll would be on 13th November, and the second phase would be along with Maharashtra on 20th November. So the date of issue of notification for Jharkhand phase 1 would be 18th, and for phase 2 would be 22nd along with Maharashtra. Nominations for phase 1 would be till 25th of October, and for phase 2 29th. This slide we will share with everyone. And date of poll would be 13th November and 20th November, both Wednesdays. And date of counting would be 23rd 11, that is Saturday. With this, we end our presentation with the request that through you, that all the voters of Jharkhand and Maharashtra कृपया बाहर आइए, कृपया वोट करिए। लोकतंत्र के उत्सव में आपकी भागीदारी कि हम बहुत ही रिक्वेस्ट करते हैं, अपील करते हैं आपसे। थैंक यू वेरी मच।